Welcome to all the participants who have come to this session. So we'll just wait a few minutes. Quite a few participants are still joining in the session. We'll wait a minute and then we'll start with the session. वेलकम टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड टुडेज सेशन। आज का सेशन जो है वो डेरिवेटिव इंडिकेटर्स के ऊपर है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनीवन हु ट्रेड्स इन डेरिवेटिव्स। दे वुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू ट्रैक द डेरिवेटिव इंडिकेटर्स। आपको क्या क्या आपके बैक ऑफ द माइंड पता रहना चाहिए जब भी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं। सो दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग। एंड ऑफ द सेशन हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। पार्टिसिपेंट्स हु हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरीज। आज का सेशन जो है वो मैं मिक्स रखूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी का। देयर आर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट background, so in order to cater to all the participants we'll be keeping the session as a mix of English and Hindi. So without wasting any further time, let's get started with today's session. तो आज के सेशन में ये ब्रॉड टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले। फर्स्ट इज ऑप्शन चेन एनालिसिस। आपको ऑप्शन चेन में क्या क्या देखना चाहिए। सी ऑल दीज थिंग्स आर एन एडिशनल टूल। ऐसा कुछ भी टूल टेक्निकल या डेरिवेटिव में ऐसा नहीं मिलेगा कि आप एक ही टूल को एनालाइज करो और उससे सब ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई टूल या बेनिफिट नहीं है। बट इफ यू मिक्स टेक्निकल एनालिसिस अलॉन्ग विद डेरिवेटिव्स, आपको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड करते समय, बिकॉज you are getting a hang of what the actual positions are being built in the derivative segment. टेक्निकल पे आप चार्ट्स पे देख रहे हो क्या व्यू बन रहा है आपका। सो व्हेन यू मेक अ मिक्सचर ऑफ बोथ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव, इट गिव्स यू अ बेटर understanding of the market and you are able to take positions with additional confidence. So that's the basic of what we are covering today. तो पहला रहेगा ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं पुट कॉल रेशियो। किधर पोजीशंस एक्चुअल में बने, किधर ऑप्शन राइटर्स ने पोजीशन बनाया, ज्यादा पोजीशंस कॉल साइड पे बनाया या ज्यादा पोजीशंस पुट साइड पे बनाया। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एनालिसिस ऑफ द पीसीआर फिगर। एंड लास्ट में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट अ ट्रेडर गेट्स बाय एनालाइजिंग द ऑप्शन ग्रीक्स। तो ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। So before moving towards the actual concepts of derivatives, let's just have a quick glance on why it is important. तो पहला जो है व्यू बनाना इम्पोर्टेंट है मार्केट्स के ऊपर। व्यू बनाने के लिए आपको अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है, बट द मोस्ट कॉमन दैट ऑल दी एनालिस्ट मेक यूज ऑफ इज टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट पे देखते हैं हम लोग कि ट्रेंड कैसा बन रहा है एक पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का। दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज फॉलोड बाई डेरिवेटिव डेटा। तो पहले हम लोग चार्ट्स पे देखते हैं हमारा व्यू क्या बन रहा है, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करते हैं, जान लेते हैं कि क्या कौन से डायरेक्शंस में पोजीशंस बन रहे हैं, किधर कॉल राइटिंग हो रहा है, तो रेजिस्टेंस किधर बन रहा है चार्ट पे। ऑल दैट इज डन थ्रू डेरिवेटिव एनालिसिस। यू एक्चुअली लुक एट द डेरिवेटिव डेटा। यू डोंट कभी भी डेरिवेटिव डेटा को एक सिंगल डे के तौर पे एनालाइज नहीं करना चाहिए। आपको एट द बैक ऑफ द माइंड मोरलेस मालूम रहना चाहिए, या फिर आपको एक एटलीस्ट एक 1 वीक का डेटा आपके पास रहना चाहिए। सो यू शुड हैव अ फोरहैंड ऑफ व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशंस आर एक्चुअली बीइंग बिल्ट। मतलब एक दिन का आप पोजीशंस देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि उसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए या शॉर्ट पोजीशंस बनाए। बट इफ यू एनालाइज द डेटा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपको ऑलमोस्ट डेरिवेटिव डेटा के अंदर भी ट्रेंड्स नजर आने लग जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो फर्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस, यू कंबाइन दैट विद द डेरिवेटिव डेटा, तो आपको एक व्यू बन जाता है कि ऑन विच डायरेक्शन यू वुड लाइक टू टेक अ पोजीशन. पोस्ट दैट यू विल कम अप विद योर स्ट्रेटेजी. देखो स्ट्रेटेजी में आप अलग अलग चीज कर सकते हैं, अलग अलग रिस्क टाइप के हिसाब से आप पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन ट्रेडर्स हु आर कॉन्फिडेंट ऑफ बाइंग नेकेड कॉल एंड पुट ऑप्शंस. कोई कोई जन का रिस्क कम रहता है एंड दे वांट टू प्ले इट मच सेफर. बाय डूइंग दैट मींस दे वो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा हाई रहता है, बट द रिस्क इज ऑल्सो देयर विद ऑप्शन राइटिंग. उसके साथ साथ यू कैन कंसिडर टेकिंग अ पोजीशन इन फ्यूचर्स, कैश में पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं. सो फॉर्मिंग द व्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट. आप एक बार अगर व्यू बना लिया तो आप कोई भी डायरेक्शन में पोजीशन बना सकते, बट फॉर्मिंग अ व्यू इज नॉट सो सिंपल. as we have seen, it is the markets are extremely dynamic. The trend the last few days we are seeing the trend is extremely choppy in the market. तो 2 दिन का करेक्शन आ जाता है, फिर उसके बाद एक सडन शार्प रिवर्सल भी आ सकता है मार्केट में. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट द एक्चुअल ट्रेंड इज. सो these are all the different methods where you can combine both technical and derivative to form a view on the market. So these are the basic understandings before we go into the concepts of derivatives. ये आपको understanding रहना चाहिए. मैं सिंपल में एक्सप्लेन करता हूँ. कॉल अनवाइंडिंग मतलब बुलिश मोमेंटम, मतलब पहले जिसने शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे. सी कॉल राइटिंग इज बेसिकली यू हैव अ बेरिश व्यू ऑन द मार्केट. अगर आप कॉल राइटिंग कर रहे हो इसका ये मतलब है आपका व्यू मार्केट के ऊपर नेगेटिव है. एंड अगर कोई जिसने जिसने कॉल राइट किया है अगर वो अपने पोजीशंस को अनवाइंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रैप्ड हो चुका है. So that's why it is known as call unwinding, which is a bullish indication. मतलब जिसने short positions create कर रहे थे वो अपने positions अभी काट रहे हैं, which is a bullish indication. Likewise अगर put unwinding आपको किधर दिख जाता है, it is bearish momentum. तो इसका ये मतलब है जिसने put options write किए थे. So you have to understand everything from a writer's perspective. इसमें जो derivative data most of the times in most of the concepts, it is analysis of the derivative from the seller's perspective, not from the buyer's perspective. The reason for analyzing derivative data from seller's perspective is आपको अगर positions बनाने हैं derivatives में selling side पे तो आपको margin भी higher लगता है. So someone who's putting a higher margin into a particular trade, generally it is considered that he has higher level of information compared to a normal option buyer. But we make use of this derivative data and you can be either on the buying side or the selling side. It's not necessary that you have to be a seller itself, but you can make use of the derivative data and create positions. लाइकवाइज आप इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस के पीसीआर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पीसीआर क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या है, एंड हाउ यू कैन डिटरमाइन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एन इंडिविजुअल स्टॉक और द इंडेक्स. लास्ट आप जो हम लोग इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव इज अगर आप पीसीआर डिटरमाइन कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं, यू आर मोर और लेस एबल टू डिटरमाइन द बैंड फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक फॉर द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस और द एक्सपायरी. तो अगर आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक में एक्सेसिव कॉल राइटिंग है, देन इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड. लाइकवाइज कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक में एक्सेसिव पुट राइटिंग है, देन यू कैन बी लिटिल कॉन्फिडेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिसिस दैट दैट पर्टिकुलर जोन कुड एक्ट एज द सपोर्ट जोन. ये इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी स्ट्राइक में एक्सेसिव हुआ तो इट इज डेफिनेटली 100% गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस. टेक्निकल और डेरिवेटिव में 100% कुछ नहीं रहता, but it is an additional confidence signal that you get that okay ये particular level पे इतना अगर put writing हुआ है या call writing हुआ है, that means traders are also visualizing that ये particular level पे resistance या support हो सकता है. That is what we should have at the back of our mind. Other than that, we should always be prepared on the risk management size with our stop loss along with the proper or appropriate position sizing. Now moving forward towards understanding the various market scenarios. So see, it is not important to know whether the market is going to open gap up or gap down. ये खुलने के बाद आपको क्या करना है, that is what is very challenging. Many times you will see that Nifty is opening 100-150 points up or 100 points down. That is okay, but उसके बाद आपको क्या करना है? How do you get that confidence is what is very important, because for a trader it does not matter whether it's a gap up or a gap down opening if he is an intraday trader. उसको उसके बाद क्या पोजीशंस डेवलप करने हैं, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर एक फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, अगर आज के डे में देखोगे तो ऑलमोस्ट एक 30-40 पॉइंट्स का फ्लैट ओपनिंग था, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट नहीं हुआ था. सो बट इफ देयर इज अ फ्लैट ओपनिंग एंड इफ यू सी देयर इज
एग्रेसिव पुट राइटिंग, कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक में एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा है, दैट मीन्स ट्रेडर्स का ये एंटिसिपेशन है कि भले ही मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, उसके बाद देयर कुड बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द रैली ऑन द अपसाइड, या मोमेंटम रह सकता है ऊपर के डायरेक्शन में. दैट इज व्हाई दे आर डूइंग एग्रेसिव पुट राइटिंग. तो मान लो निफ्टी 22,400 पे कल ओपन होता है एंड एग्रेसिवली देयर इज राइटिंग इन 22,300, 22,350 स्ट्राइक. तो इसका ये मतलब है ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग दैट द इंडेक्स इन दैट पर्टिकुलर डे विल कंटिन्यू द मोमेंटम ऑन द अपसाइड एंड विल नॉट ब्रीच द लेवल ऑफ 22,300 या 22,350 ऑन द डाउन साइड. लाइकवाइज अगर एक फ्लैट ओपनिंग हो जाता है एंड देयर इज एग्रेसिव कॉल राइटिंग, इसका ये मतलब है ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग बेरिश मोमेंटम इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन. So if tomorrow there is an opening at closer towards 22,350 and 22,400 के कॉल में aggressive call writing start होता है सुबह से, that means traders are expecting more or less that the index will remain range bound to a slightly negative bias. That means they have that particular view that the index may not cross the level of 22,400 in today's trading session, and that's why they have aggressively built positions in that particular strike price. लाइकवाइज अगर आप देखोगे एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी इफ देर इज एग्रेसिव पुट राइटिंग, दैट मीन्स ट्रेडर्स आर स्टिल एंटिसिपेशन कि भले ही एक 100-150 पॉइंट्स का गैप अप हुआ है, उसके बाद भी देर इज अ चांस दैट द मार्केट्स कैन कंटिन्यू द पॉजिटिव मोमेंटम ऑन द अपसाइड. So that is why they aggressively do put writing even though there is a gap up opening. So these are the various scenarios that a trader should understand. He should analyze the option chain in this particular manner एंड डीकोड की एक ओपनिंग होने के बाद भी कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है. दैट इज व्हाट डेरिवेटिव डेटा हेल्प्स द ट्रेडर अंडरस्टैंड. अलोंग विद दिस आपको डेफिनेटली प्राइस एक्शन का तो चार्ट आपके सामने रखना ही है, बट इफ यू कीप द डेरिवेटिव डेटा ऑल्सो अलोंग विद यू, इट डेफिनेटली कम्स हैंडी. तो ये आज के सेशन का ओआई चार्ट है, ऑप्शन चेन का चार्ट है. तो अगर आप देखोगे देयर वाज एन ओपनिंग क्लोजर टुवर्ड्स 22,350 380 लेवल्स एंड उसके बाद ऑलमोस्ट द एंटायर ट्रेडिंग डे निफ्टी ट्रेडेड इन अ रेंज ऑफ जस्ट अबाउट 50 to 60 पॉइंट्स. इतने के अंदर ही पूरा दिन ट्रेड हुआ, दैट इज पोस्ट द ओपनिंग. तो अगर आप देखोगे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पोजीशन बनाया नहीं था, सब जन ने, इफ यू सी देयर वाज राइटिंग एग्रेसिव राइटिंग इन दी 22,400 कॉल एंड पुट ऑप्शन, दोनों स्ट्राइक में राइटिंग हुआ था. आप देख सकते हो ह्यूज फिगर्स ऑन बोथ द साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कॉल साइड का डेटा है, राइट हैंड साइड पे जो है वो पुट ऑप्शन का डेटा है. तो आप देख सकते हो, मैंने स्पेशली हाईलाइट भी किया है वो रेड कलर डिब्बे में. तो आप देख सकते हो कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है फॉर दी 22,400 एंड 22,300 स्ट्राइक्स. तो क्लियरली द ट्रेडर्स वर एक्सपेक्टिंग कि आज के सेशन में मार्केट किधर नहीं जाएगा, इट वुड बी अ रेंज बाउंड सेशन, एंड दैट्स व्हाई द एट द मनी स्ट्राइक जो है 22,400, उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में एग्रेसिव राइटिंग हो रहा था. पूरा का पूरा दिन अगर आप देखोगे निफ्टी जस्ट एक 40-50 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड हो रहा था एंड देयर वाज वर्चुअली नो ब्रेकआउट इन ईदर डायरेक्शन. सो अगर आप ओआई डेटा एनालाइज कर लेते तो यू वुड नो दैट टुडे कुड बी अ रेंज बाउंड ट्रेडिंग डे. अगर आप देखोगे हमने वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी भी दिया, भले हमने इंट्राडे में भी स्कैल्पिंग के तौर पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल एंड पुट ऑप्शंस दिए, बट फ्रॉम अ पोजिशनल व्यू वी गेव द स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी, आयन कॉन्डोर जो बोलते हैं हम लोग, जिसमें हमने 22,400 का कॉल एंड पुट बिकवाया था एंड 100 पॉइंट दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी किया था इन ऑर्डर टू हेज द पोजीशन. So from a positional perspective, that is the strategy that we consider to do in trade today, taking into consideration the range bound nature of the market. So this is just another visual representation of the same data. OI का ही डेटा है, जिसमें आप देख सकते हो 22,400 का स्ट्राइक प्राइस पे मैंने हाईलाइट किया है. The main thing to note is the open interest surge in this particular strike price. So clearly you can see that it was not any one particular direction that there was aggressive call writing or put writing. It was the at the money strike 22,400 strike पे aggressive call and put writing हो रहा था. So traders were expecting that the markets would remain range bound in trade today. तो what you have to understand when you look at the option chain data, तो आप जब ये option chain को analyze करोगे, the main thing to analyze is maximum call open interest जिधर है, it means that that particular level would act as the resistance. तो अगर आप देखोगे 22,400 के स्ट्राइक प्राइस में ही मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है ये पर्टिकुलर एक्सपायरी का.
जो 25 को है, उस एक्सपायरी का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो बिल्टअप हुआ है 22,400 के स्ट्राइक में. सो अगर आप एवरेज प्रीमियम को जोड़ दोगे वो स्ट्राइक प्राइस से, सो समवेयर अराउंड 22,440 22,460 वुड बी द रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट. आपको वो स्ट्राइक प्राइस को ही रेजिस्टेंस नहीं मानना है, आपको मोर और लेस वेटेड एवरेज ढूंढना है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, प्रीमियम का, and that has to be added to the strike price. तो अगर 40 to 60 rupees is the average traded price of that particular strike, then you have to add it to 22,400. That would be your resistance level. So you can consider somewhere around 22,440 22,460 to be the resistance for the market at the current juncture. And नीचे के level में you can consider as 22,320 340 levels to act as the support zone. So highest open interest on the call side is the resistance. Highest open interest on the put side is the short-term support zone. Now let us go to an example of why tracking OI data is very important. ये जो example है थोड़े मतलब I had taken it a few days, trading days back. This is the OI data of Bank Nifty. तो आप देख सकते हैं there was short covering which happened in the market. I'll explain it with an example. तो मैं बहुत simple example लिया है मैंने, so that everyone gets an understanding of the concept. तो what that particular data I want to show is, ये आप देख सकते हो, अगर आप if you are able to see it, there was heavy short covering which happened in all the major strike prices between 46,000 to 46,500. तो इसका एक रीजन है कि क्यों ये बना था. So you can see that जब भी at the start of the trading day, सुबह के trading session में there was a gap down opening. तो गैप डाउन ओपनिंग होते ही सबने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी जो है एक नेगेटिव जोन में ट्रेड हो सकता है या फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, बट नो वन एक्सपेक्टेड द मार्केट्स टू रिबाउंड. तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशंस बनाए थे, स्पेशली इन 46,500 के कॉल ऑप्शन में. तो 46,500 का कॉल ऑप्शन में एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुआ था पोस्ट द गैप डाउन ओपनिंग. Then what happened is, post around midway through the session, बैंक निफ्टी में एक एक्सट्रीमली शार्प रिवर्सल हुआ था आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के कारण. देयर वाज अ रिवर्सल इन द मार्केट एंड बैंक निफ्टी रैलीड फ्रॉम 46,367 जो उसका लो पॉइंट था. इट रैलीड ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 आवर्स. तो इसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स जो है, दिस इज द चार्ट ऑफ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी फॉर्म्ड अ लो ऑफ 46,360 लेवल्स एंड उधर से ऑलमोस्ट एक 600 पॉइंट्स की रैली आई थी बैंक निफ्टी में. तो बहुत सारे ट्रेडर्स जिन्होंने 46,500 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था, दे गॉट ट्रैप्ड ऑन द रॉन्ग साइड एंड व्हेन द इंडेक्स सरपास द लेवल ऑफ 46,600 46,700 which was the resistance zone, they started panicking and they started closing out their short positions. Whenever there is aggressive closing of short positions, there is further rally which is seen in the market because traders have to close their position and at that time the prices start increasing at a very rapid pace. तो आप क्लियरली चार्ट में देख सकते हो द टाइप ऑफ ब्रेकआउट विच केम. द कैंडल्स आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस जोन के पास कितने बड़े बड़े कैंडल्स आए थे विच क्लियरली टुक आउट द रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड. सो दैट इज द पावर ऑफ शॉर्ट कवरिंग. अगर आप डेटा ट्रैक कर रहे हो तो आपको बैक ऑफ द माइंड अगर आप ध्यान भी रख सकते हो कौन से स्ट्राइक प्राइस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, and when the market witnesses a breakout above those particular zones, then you can anticipate there could be further short covering in the market as traders who have got trapped on the wrong side will consider to close out their position. तो जिन्होंने भी short positions build up किए थे, उन्होंने panic में अपने positions काट लिए, which led to a further rally in the market. So this is the example that I wanted to highlight. So if you know, अगर आप option chain में track कर रहे हो on a daily basis, weekly basis, मैक्सिमम ओआई किधर बिल्टअप हुआ है बैंक निफ्टी में, मैक्सिमम ओआई किधर बिल्टअप हुआ है निफ्टी में. सी दीज थिंग्स विल नॉट हेल्प यू इन डूइंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग्स, बट अगर आप थोड़ा बड़ा पोजीशन ट्रेड कर रहे हो या फिर इफ यू आर डूइंग इट इज जस्ट गिविंग यू एडिशनल कॉन्फिडेंस. तो आप जब भी पोजीशन भी भले ले रहे हो, यू नो व्हाट इज रनिंग इन द माइंड. इट्स नॉट जस्ट यू आर टेकिंग अ पोजीशन एट 100 एंड एक्सपेक्टिंग कि फिन निफ्टी इतना जा सकता है. एट द बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो दैट why you are taking the trade. मतलब आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह रन होना चाहिए that this is the reason why I am taking this particular position. Either this is the levels where the call writers have got actually trapped
and there could be a further short covering rally in the market, which could take the premium price from about 100 to 150, 160 levels, because that's what generally happens when traders get trapped. There is extreme short bursts of price movements. So now, after understanding the concept of open interest, let us move to another very interesting concept that is known as put call ratio. See, open interest में आपको मालूम है कि कौन से साइड पे OI बिल्टअप हुआ है, दैट इज ईदर कॉल साइड, पुट साइड. बट अगर आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के तौर पे आपको उसको इंटरप्रेट करना है, यू वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कॉल साइड पे ज्यादा पोजीशंस है, दैट इज ईदर ऑन द शॉर्ट साइड, और पुट साइड पे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस है, दैट कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड बाय एनालाइजिंग दी पीसीआर, जो हम लोग बोलते हैं. काफी बार आपने टीवी पे भी देखा रहेगा, या एनालिस्ट भी बार बार इसको यूज करता है. इट इज नोन एज पुट कॉल रेशियो. तो ये पुट कॉल रेशियो क्या है, विल अंडरस्टैंड इट विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स. तो जो भी कॉन्सेप्ट जो है, आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जांपल्स इटसेल्फ, सो दैट एट द बैक ऑफ द माइंड विल बी एबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली. ये पुट कॉल रेशियो जो होता है, इट इज द टोटल पुट ऑप्शंस रिटर्न. मतलब आपको एनालाइज जो करना है, वापस मैं बोल रहा हूँ, जो भी डेरिवेटिव डेटा का मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन इज डन फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव. तो आपको एनालाइज करना है ऑप्शन चेन में व्हाट इज द टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शंस का. See, for every option buyer there is an option seller, that is 100% we know, but we are just analyzing that from what is the interpretation from the seller's perspective. मतलब जिसने options बेचे हैं उसका व्यू क्या है, and how we can make use of the OI data is what we are trying to explain. So if you see the formula for put call ratio, it is nothing but total put options divided by total call options. आपको ये डेटा एनएससी के ऑप्शन चेन में मिल जाएगा, या फिर कोई भी अगर आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो यू विल गेट द टोटल ओआई फॉर दैट पर्टिकुलर वीक. तो अगर आप ऑप्शन चेन के एंड में भी अगर आप स्क्रॉल करोगे, आप देख पाओगे कि व्हाट इज द टोटल ओपन इंटरेस्ट फॉर निफ्टी एट द करंट जंक्चर. सो जनरली हम लोग देखते हैं ओआई का जो फिगर रहता है, इट इज ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर बेसिस बिटवीन 0.9 टू 1.1. तो इसका ये मतलब है जितना पुट ऑप्शंस राइट हुआ है उतना ही लगभग कॉल ऑप्शंस भी राइट हुए हैं सिस्टम में. सो दैट इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज व्हेन द पीसीआर इज बिटवीन 0.9 टू 1.1. अगर ये पर्टिकुलर फिगर इज लेस देन 0.7, दैट इज पुट कॉल रेशियो का फिगर जो है, इट इज लेस देन 0.7, it is a bearish indication. Why it is a bearish indication? That means that there is more call options which are written in the system in comparison to put options. Why? Because if the denominator is more than the numerator, the figure will come less. अगर ये figure numerator का जो figure है, it is more than the denominator, the figure will be more than 1. It is simple mathematics. So when the figure is below 0.7, 0.6, it means that there is more call options which are written in the system compared to put options. That is a bearish indication. Likewise, अगर सिस्टम में ये पीसीआर का जो फिगर है, वीकली पीसीआर जो हम लोग देखते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट फॉर वीकली ऑप्शंस, मंथली ऑप्शंस, बट मोर द इंटरप्रिटेशन इज बेटर फॉर द वीकली साइड, because that is where the maximum contracts are getting traded on a day to day basis. तो अगर ये फिगर 1.2 के ऊपर है, it means that there is more put options which are written in the system compared to call options. That is why the PCR figure will come more than 1.2. So I hope everyone has understood this particular slide clearly. It is very simple. It is just mathematical understanding of what is the total open interest. Open interest basically means the open positions. Call side या put side पे कितना open positions है एक particular trader का at any particular situation in the market. That is what is meant by open interest. फिर आपको ढूंढना है कि ये ओपन इंटरेस्ट कितना पुट साइड पे है और कितना कॉल साइड पे. सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, यू अंडरस्टैंड दैट बेस्ड ऑन द टोटल ओपन इंटरेस्ट इन द मार्केट, whether it is more of call writing or more of put writing. So that is what this basic figure is telling us. And from that interpretation, we come to know that the view of majority of the traders at the current juncture is either on the bullish side or on the bearish side. So like I mentioned, अगर ये पीसीआर फिगर का जो फिगर है 1.2 के ऊपर है, इट इज स्ट्रांगली बुलिश. आप इंडिविजुअल स्ट्राइक का भी पीसीआर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आपको ढूंढना है, मालूम पड़ना है कि 22,400 का पीसीआर क्या है, यू कैन डिवाइड द टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ 22,400 पुट्स
डिवाइडेड बाय 22,400 कॉल ऑप्शन, तो आपको एक इंडिविजुअल स्ट्राइक का भी पीसीआर मिल जाएगा. फ्रॉम दैट यू विल कम टू नो दैट मोर और लेस people are more aggressive on the put side or on the call side at that particular strike price. So how to interpret it? अगर ये पर्टिकुलर फिगर पहले आपको मालूम कि आज के डे के स्टार्ट में ये पर्टिकुलर फिगर 1 है, ये स्टार्टिंग एट द डे द नंबर of call option sellers and put option sellers are equal. That's why the PCR figure is around 1. If this figure moves from around 1 to 0.45 levels on the downside, it means that within the trading day, people have squared off their put options and have done aggressive call writing. Either numerator कम हुआ है या denominator बढ़ा है. One of the two things can happen, and this will result in the PCR figure coming below 1 on the downside. I hope you have understood what I'm trying to say. Likewise, अगर ये figure around 0.7, 0.6 के पास है and it moves towards levels of 1, 1.5, it means that there is more aggressive put writing which is happening, or traders have squared off their call positions, मतलब writing के side पे. So that is why this figure will now move from 0.7, 0.8 levels towards 1.5 on the upside. So when that happens, it is a bullish sign in the market. मतलब traders ने एग्रेसिवली पुट राइटिंग की है जिसके वजह से ये फिगर ऊपर की तरफ गया है. दैट मीन्स न्यूमरेटर हैज इंक्रीज्ड, डिनोमिनेटर हैज डिक्रीज्ड, या फिर डिनोमिनेटर हैज रिमेन द सेम बट स्टिल द न्यूमरेटर हैज इंक्रीज्ड. इन दीज टू सिनेरियोज द पीसीआर फिगर विल मूव फ्रॉम अराउंड 0.7, 0.8 levels towards levels of 1.5 on the upside. So that is a simple and clear understanding of PCR and how it has to be interpreted. It does not mean that आपको एक पीसीआर का फिगर मिल गया तो आपको पता चल जाएगा मार्केट का ट्रेंड, बट यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग विद द पीसीआर. पीसीआर घट रहा है, बढ़ रहा है, कौन से लेवल्स पे एग्रेसिव राइटिंग हो रहा है मार्केट में. दैट इज व्हाट इज द की टू अंडरस्टैंड पीसीआर एंड हाउ यू कैन टेक अ ट्रेड और पोजीशन इन द मार्केट. So now we have covered two topics, that is one is option chain and the second topic is PCR. Let us move towards a very important topic, that is option Greeks. तो ये बहुत ही important topic है. When anyone is doing trading in options, either Nifty, Bank Nifty, basic things आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आपने एक particular strike price buy किया है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर चला जाता है, आपको ये तो मालूम रहना चाहिए कि आपका ऑप्शन प्राइस भी कितने से बढ़ेगा. एटलीस्ट दैट मच शुड बी क्लियर इन योर हेड. आपको एक रफ फिगर भी अगर आपको मालूम है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो आपका ऑप्शन प्राइस कितने से ऊपर जाएगा, यू विल बी इन अ मच मोर कंफर्टेबल एनवायरमेंट देन रादर देन जस्ट हंटिंग हियर एंड देयर. तो आपको बैक ऑफ द माइंड यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस एंड हाउ द एक्चुअल प्राइस एक्शन टेक्स प्लेस ऑन द ऑप्शन साइड. सो डेरिवेटिव्स में जो है ऑप्शन ग्रीक्स में स्पेसिफिक 5 अलग अलग ऑप्शन ग्रीक्स है. आई विल जस्ट बी कवरिंग द बेसिक्स आज के सेशन में, क्योंकि उसके अंदर ही एक वास्ट टॉपिक है. ऑप्शन ग्रीक्स इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ वास्ट टॉपिक. तो आई विल बी टेकिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड 2 ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, दैट इज डेल्टा एंड थीटा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स है. सो दीज 2 ऑप्शन ग्रीक्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल इन टुडेज सेशन. तो वे विल गो वन बाय वन, हर एक ऑप्शन ग्रीक के बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट इज डेल्टा. डेल्टा क्या बोलता है? सी, डेल्टा इज बेसिकली टेलिंग अस दैट इफ द इंडेक्स मूव्स बाय 100 पॉइंट्स, टू अंडरस्टैंड इट इन सिंपल मैनर, अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर जाता है तो आपने जो बाय किया है 22,400 का कॉल ऑप्शन, वो कितने से ऊपर जा सकता है. दैट इज व्हाट डेल्टा इज बेसिकली टेलिंग अस. डेल्टा जो है कॉल ऑप्शन के लिए 0 और 1 के बीच में रहता है. तो एट द मनी ऑप्शंस जो रहते हैं उसका डेल्टा जनरली 0.5 रहता है. इसका ये मतलब है कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट से ऊपर जाएगा, मोर और लेस योर ऑप्शन प्राइस विल गो अप बाय अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड. सो डेल्टा इज बेसिकली टेलिंग अस दैट कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा बी इज बिटवीन 0 and 1, पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा बी इज बिटवीन 0 and -1. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रहता है पुट ऑप्शन के लिए. बट विल फोकस ऑन वन साइड. इफ यू अंडरस्टैंड वन साइड कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, you will be able to interpret for the put options as well. Next is gamma. तो ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है ये स्टैटिक नहीं रहते. अगर डेल्टा कोई स्ट्राइक का 0.5 है, इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरा लाइफ साइकिल तक वो 0.5 ही रहेगा.
डेल्टा भी चेंज होते रहता है मार्केट के मूवमेंट्स के साथ, सो द डेल्टा विल नॉट बी स्टैटिक। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा अगर 0.5 है तो वो 0.5 से 0.6 कितना फास्ट होगा या 0.7 कभी होगा, दैट इज व्हाट गैमा इज बेसिकली टेलिंग अस। तो गैमा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ये एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, विल नॉट फोकस मच ऑन इट, बट यू शुड जस्ट नो दैट डेल्टा जो 0.5 है दैट कैन मूव टुवर्ड्स 0.6 0.7 लेवल्स एज वेल, and the rate at which it changes from 0.5 to 0.7, that is what is basically being told by gamma. नेक्स्ट जो है टीटा है, जो है दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू। इसको इंटरेस्ट के तौर पे भी बहुत जन मानते हैं। इट इज द इंटरेस्ट दैट पीपल ऑप्शन सेलर्स जो रहते हैं, दैट इज व्हाट दे गेट ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड टीटा इज मोर और लेस द इंटरेस्ट दैट यू पे टू द ऑप्शन सेलर। तो व्हाट बेसिकली टीटा इज टेलिंग कि अगर मार्केट उसी लेवल पे बंद हुआ, आज मार्केट 22,400 पे ओपन हुआ एंड 22,400 के लेवल्स पे ही बंद हुआ, but still your option price will decrease by a certain premium. The amount with which it decreases on a day-to-day basis, if the index remains absolutely at the same level, अगर इंडेक्स वही का वही रह गया एक फुल ट्रेडिंग डे में, फिर भी आपका ऑप्शन का प्राइस कॉल साइड पे भी और पुट साइड पे भी डिक्रीज होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम व्हेन द पर्टिकुलर अंडरलाइंग रिमेन्स एट द सेम लेवल इज नोन एज टीटा। तो टीटा एक नेगेटिव फैक्टर है ऑप्शन बायर्स के लिए, एंड इट इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर एन ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर जो रहता है, ही इज बेसिकली ट्राइंग टू कैप्चर दी टीटा, जो ऑप्शन प्रीमियम जो इरोड होता है ऑन अ डे टू डे बेसिस, दैट इज व्हाट ही इज बेसिकली ट्राइंग टू कैप्चर, एंड इट इज स्लाइटली नेगेटिव फॉर एन ऑप्शन बायर, बिकॉज इवन दो हिज व्यू डज नॉट गो रॉन्ग, अगर इंडेक्स उसने सोचा है कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है, भले अगर मार्केट ऊपर भी ना जाए और साइडवेज भी रहे, फिर he tends to be on the losing side because of the option premium decrease. Likewise we have another concept which is known as Vega, जो हम लोग volatility बोलते हैं। देखिए कभी भी मार्केट जब भी volatile होता है, the option seller जो रहते हैं उसके लिए रिस्क भी बढ़ जाता है। The reason why the option premium goes up when the markets become volatile is the option seller starts charging a premium when the markets become volatile. तो जैसे जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, द मार्केट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट मोर वॉलेटाइल। तो सेलर जो रहता है, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी एट ट्रिमेंडस रिस्क, क्योंकि मार्केट कोई भी डे पे कैन मूव बाय 300-400 पॉइंट्स। सो जनरली व्हेन द मार्केट्स टेंड टू गेट मोर वॉलेटाइल, ऑप्शन सेलर्स टेंड टू चार्ज अ हायर प्रीमियम फॉर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरा रिस्क बहुत बढ़ जाता है, सो दैट द प्रीमियम दैट आई एम गोइंग टू चार्ज यू इज स्लाइटली गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड. So that is the reason when the volatility in the market increases, option sellers charge a premium. That is why the price of the options goes up when the volatility in the market increases. And the last is regarding interest rate, जो हम लोग बोलते हैं. See, interest rate plays a very small factor in our day-to-day option trading. क्योंकि अगर interest rate suddenly spikes from 5 to 10% within the life cycle of an option, then it will have some impact. But from an weekly option perspective या फिर monthly option perspective, interest rate even if it moves by 0.25 in either direction, it has absolutely no impact on the pricing of the options. So from an interest rate perspective, it is the least significant among all the option Greeks that we have in the market. सो नाउ लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड डेल्टा। हम लोग आज के सेशन में दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज डेल्टा एंड टीटा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। सी डेल्टा, लाइक आई एक्सप्लेन्ड, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद द चेंज इन द अंडरलाइन। तो आप देख सकते हैं, आई ट्राई टू हाईलाइट इट बट आई एम नॉट श्योर हाउ क्लियर इट इज, इट्स एन इमेज विच आई हैव टेकन। तो आप देख सकते हो 22,400 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा जो है दैट इज 0.49. सो व्हाट इट बेसिकली इज टेलिंग अस दैट इज टुमारो इफ निफ्टी मूव्स 100 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, that 22,400 call option will move by at least 49 points in your direction. See, when nifty moves 100 points in upward direction, डेल्टा भी चेंज होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो डेल्टा जो 0.09 पे है, आई मीन 0.49 पे है, वो उसी लेवल पे रहेगा, वो ऑलमोस्ट 0.55 0.6 लेवल्स तक जाएगा, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट दैट वे, इट बिकम्स चैलेंजिंग टू एक्सप्लेन। सो आई जस्ट मेंटेन्ड अ स्टैटिक डेल्टा। तो एटलीस्ट 49 पॉइंट से आपका जो कॉल ऑप्शन उतने से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड
how you can understand it in terms of probability as well. See, delta is not only for understanding how many points or premium आपको कितने से बढ़ेगा. It is also in terms of probability that you can understand delta. So what I want to tell is, अगर 22,400 का कॉल ऑप्शन जो है उसका डेल्टा 0.59 है, 0.49 है, इसका ये मतलब है कि जो थर्सडे जो आ रहा है, that is 25th of this month, there is a 49% chance that Nifty will close above 22,400 at the time of expiry. Likewise, अगर आप slightly out of the money option देखोगे, that is 22,600 या 22,700, उसका डेल्टा रहेगा between 0.2 से 0.3. That means there is just a 20% or 30% chance that Nifty will close above 22,600 at the time of expiry. If you buy a deep out of the money option, जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 22,400 के पास, और अगर आपने 23,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया सोच के कि वो सस्ता है, ₹2 पे चल रहा है, क्या मालूम वो ₹100 तक जा सकता है, बट the delta of that particular option will be just about 0.05 या 0.01. That means there is just about anywhere between 1 to 5% chance that the markets will surpass 23,000 by the time in the next two trading sessions. See, किसी को भी नहीं लगता कि markets will move about 600 to 700 points when there is so much geopolitical tension in the market. ये सब factors जब भी है, there is an extremely small chance that the index will move towards 23,000 levels in the next two trading days. So you can, when you look at the delta of a particular strike, you will know the probability of success as well. तो आपको मोर लेस मालूम है कि आप ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हैं, उसका डेल्टा 0.2 है, so there is a 20% chance that you will be in the money at the time of expiry. See, if you are doing intraday scalping, आपको सिर्फ प्रीमियम पे फोकस करना है, आपको ये एक्सपायरी पे किधर रहेगा उसका सब लेना देना नहीं है. But if you are a positional trader, this factor helps you in gauging the probability of success of the option that you are going to purchase. Likewise, अगर आप put option के लिए भी देखेंगे, it is more or less similar. आप देखोगे 22,400 का put option जो है उसका भी डेल्टा जो है that is at 0.49. So there was 49% chance that the index will close below 22,400 by the time expiry comes, because the index is trading at the same level. मतलब 22,380 390 के पास ही चल रहा है. So more or less the delta of both these particular indexes will be at the similar price. So this is how you can make use of delta as a probability indicator whenever you are taking a trade in the market. So now moving for the next concept, that is theta. So delta के बारे में हमने डिस्कस किया. Now let's discuss about another concept which is known as theta. Theta जो है that basically tells you the rate of decay in the market. जो मैंने कहा था, theta acts as an interest rate factor for the option buyers. तो जैसे कि मैंने previous slide में भी कहा था, theta is basically the rate of change of the premium. जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितने रेट से डीके होता है on a particular day-to-day basis. So if you have 5 trading sessions and if the index remains absolutely flat, तो आज के सेशन में देखोगे तो the index was absolutely flat for almost 90% of the trading session. तो there was nothing but option premium decay which was happening. So अगर आप देखोगे 22,400 का मैंने हाईलाइट किया, it may not be so clear but I will just tell you 22,400 का कॉल और पुट दोनों स्ट्राइक्स का, कॉल और पुट दोनों का थीटा वैल्यू जो है आज 22.5 था. व्हाट इट मींस इज इफ द इंडेक्स क्लोज्ड एब्सोल्युटली फ्लैट, निफ्टी में एक पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं था, एंड इफ इट क्लोज्ड एब्सोल्युटली एट द सेम लेवल्स 22,400 पे ही बंद देता था इंडेक्स, स्टिल एन ऑप्शन बायर हु हैज परचेज्ड ईदर अ कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन will end up losing 22.5 rupees on the premium. मतलब प्रीमियम सपोज 100 था, it will come down to 78 at the end of the trading day. By that much points the premium will erode because one particular day has reduced. आपके पास व्यू सही होने के लिए पहले, इससे पहले 3 ट्रेडिंग सेशंस थे, अभी सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशंस बचे जिसमें आपका व्यू राइट हो सकता है. यू जस्ट हैव वेडनेसडे एंड थर्सडे till the time expiry comes. So with each passing day the option premium reduces by a certain amount. By how much it reduces on a particular day, that is what theta is basically telling to us. So I hope everyone is clear with what is meant by theta. Theta is the rate of decay of the option premium
on a day-to-day basis. So this is a summary of what we have discussed. So delta is basically direction के regarding है. अगर आपका call side पे है, so you want delta to increase fast. Likewise means buying of options, you are concerned regarding delta. Gamma जो है, that is acceleration, because it means how fast the delta can change. So you are concerned with gamma as well for an option buyer. Theta जो है, that is a friend of an option seller. It is the enemy of an option buyer. Theta is definitely an enemy of an option buyer. It is the friend of an option seller, because option seller का क्या benefit है? Even if he gets his view wrong by a certain points, the rate of decay of the option premium can still help him be on the winning side. And the last is Vega, जो volatility जो है, that I've already discussed, that if the volatility increases in the market, then the option premiums tends to increase. The reason for this is very simple. The option seller wants to quote a higher price. जो option selling कर रहा है, he definitely has fear कि जब volatility बढ़ता है तो उसका भी position wrong जा सकता है. इसका ये मतलब नहीं कि option seller जो है वो हमेशा पैसा कमाएगा, because he wants to be on the safer side. The volatility is so high in the market, he will start charging a higher premium. And that is why when the volatility increases, the price of options both on the call side as well as on the put side tends to increase. जैसे कि आप अगर देखोगे कोविड के टाइम पे, when the volatility was extreme and there was extreme fear in the market, you would see that the at the money options were extremely high in terms of pricing, because the type of movement, आप एक दिन में ही निफ्टी में 600-700 पॉइंट का मूवमेंट देख रहे थे. No one knew it would be on the upside or the downside. So that's the time when the option prices are slightly higher priced compared to normal day to day trading. And likewise कभी भी एक मेजर इवेंट जब भी आता है, अगर इलेक्शंस मान लो, आरबीआई का पॉलिसी मान लो, फेड का पॉलिसी मान लो, या कोई भी मेजर इवेंट which could have drastic impact on the market, whenever such type events are going to play out in the market, the price of the options tends to increase. And exactly when the result or the outcome is announced of that particular event, the price of the options drastically comes down. So it is slightly challenging to play this scenario as well, because there is a rapid decline in the option premium once the volatility or Vega factor gets discounted in the market. So that's an end of today's session. तो ये सारे topics मेरे को discuss करने थे. Participants who have any queries, किसी का भी अगर query है ये particular topic पे, then we'll be taking them in the next few minutes. Thank you so much to all the participants for having taken the time out and having attended today's session. Thank you. So participants, if you have any queries, you can type it in the comment section. One by one, we could take the questions. If there is any concept that you want me to explain again, आपको कोई भी doubt है regarding any particular concept, then we'll be more than happy to explain it. We'll just wait a couple of minutes. If there are no queries from any of the participants, then we could clear the session. We'll be having multiple sessions in derivatives and technicals. So I would kindly request all the participants or whoever has any queries to kindly attend. So there is a suggestion from Satish Kumar. Sir, all events, please share and explain effect market year on year. So I can take it, but to make an entire presentation on that would be slightly challenging. But we'll add a slide in next time's presentation where अगर budget जो रहता है, budget sorry, if when the elections are around the corner, what is the type of average gains which are seen 6 months prior to the elections,
and 6 months prior, post the election outcome. So that is a very useful slide. I just do not have it at the back of my mind, but if you track it, if you see, generally there has been a positive reaction. Whichever government has come into power, there has been a positive, as long as it's a stable government. What the market wants is stability. It does not want a fractured market. तो अगर आप देखोगे 2009 when Congress also came into power, it was a majority government. Then again we got a majority government in 2014 and 2019. So the markets only want stability. As long as there is stability and continuation, there is a positive reaction which is seen in the market. So we have seen that 6 months post the election outcome, there has generally in the last 3 outings there has been a positive outcome in the market. So now there is a question regarding importance of IV. IV is nothing but implied volatility of a particular option. So IV जब भी बढ़ता है, particular see IV is there for every particular strike price. For every strike price there will be an IV. So IV indicates the buying, the rate at which there is buying happening for that particular strike price. Whether there is panic based buying, अगर IV बढ़ रहा है for any particular strike price, that means there is buying of options. When IV is gradually coming down, it means that for a particular strike price there is selling which is happening. तो अगर आप gradually देखोगे 22,400 का, see I'm not telling that I have observed the IV for the particular strike price, but if you have observed it, if the IV is increasing, अगर वो 13-14 levels पे and it keeps on gradually increasing through the day, that means there is gradual buying of options of that particular strike price which is happening. So increase in IV indicates buying of a particular strike price which happens. Please explain about gamma. So gamma जो है, so if for gamma it is a second order derivative जो है, जो हम लोग बोलते हैं. The reason for this is it is the rate of change of delta. So first you have to understand delta. Delta is what it is telling is the rate of change of an option price with the change of underlying. तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट से चेंज होता है, how much does your option price move by is basically told by delta. तो delta आपको मालूम है कि अगर वो 0.5 0.6 पे है, that means about 50 to 60 points is where your option price is going to move when nifty moves by 100 points. But all these option Greeks which are there, they are not static. Static का मतलब है it remains at the same level. They are dynamic in nature. तो 0.5 से अगर निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है that also will keep on changing. It will move from 0.5 to 0.6 to 0.65. That is the rate of change of delta. So the speed at which delta keeps on changing with the change in underlying is what is told by gamma. So gamma, that is why it is known as a second order derivative, because it explains the rate of change of delta with the change in the market movement. तो कितने स्पीड से डेल्टा चेंज हो जाता है with the rate of change with the underlying, that is what is basically explained by gamma. So I hope you have understood the concept of gamma. Gamma, जब भी gamma spike हम लोग बोलते हैं, whenever it's a common term which is referred in derivative trading, that is gamma spike. It means that suddenly there is a buying spree which happens in the market and the delta rate of change of an option price keeps changing very fast. That means delta जो 0.5 0.6 पे था suddenly has moved towards 0.8 0.9. That is when there is a sudden spike which happens, gamma spike जो हम लोग बोलते हैं मार्केट में, which has resulted in the fast change of delta. So I hope I was able to explain that particular concept clearly. Next we have, today I have taken Nifty futures 2nd May 23. I do not put stop loss for both. Is it risky trade as I am now in loss? See sir, in derivatives, any trade if you do without placing a stop loss or without placing a hedge position, it becomes challenging. The reason for it, see cash segment में क्या है, even if you take a position without stop loss, you have time on your side. मतलब आपका व्यू भले ही गलत भी जा सकता है, but you have time. मतलब it's not that the position will get melted away, but in derivatives the challenge is you have to get your view within, correct view within a limited time period. अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपको 5 दिन के अंदर ही आपका व्यू सही होना चाहिए. अगर आपने फ्यूचर्स बाय किया है, within a time span of 30 days itself you have to get your view right. So if you place a trade without a stop loss and if the market moves against you,
it becomes a challenge to recover the losses for your position to come to your original buying price and then recover from there onwards. And with the derivatives, especially futures, you have to maintain an M to M as well. So if the day goes against you for a particular trading day, you will have to place additional margins with the broker to continue your position. So that also becomes challenging. So I would not go to say whether your position is right or wrong, but I just want to say that risk management in derivatives is extremely important. So kindly consider to do all your trades in derivatives. If it is intraday, directly maintain a stop loss. If you are considering to carry forward your position, please do maintain a hedge position. मतलब अगर आपको short position carry करना है, तो along with that at least buy a slightly out of the money call option. अगर आपने future short किया है निफ्टी का, you have taken a short position in nifty futures, kindly consider to take a slightly out of the money call option as well. So if there is tomorrow of 200-300 point gap up opening, so even though you will get stopped out in derivatives, because of your call position, you will be hedged to at least a certain degree. See, sir, well, there is a question. I have been a swing trader since July 2023. I wish to enter the FNO. My doubt is whether option trade can be purchased without knowing the technical jargons. So I would request you to at least do trades without actually putting your capital. Just monitor, first frame a view. Aapka view, what is your view on the market? So suppose you have a view that the Nifty in tomorrow's trading session can go on the downside. So take a virtual position. See, understand with each particular day your view is suppose 50 points on the downside or 100 points on the downside. Consider that you enter a position, see the price at which you enter, because in option trading every few minutes are very critical. It is not like swing trading that you can take a position and just leave the screen and go. Swing trading you have time on your side, but in option trading you have to be virtually in front of the screen if you're doing intraday trading. So all these difficulties do arise. You will have to dedicate more time at your end to do option trading, and option trading requires that you have a more sharper judgment in terms of reaction time, because in swing trading the option price, I mean the prices will not move so fast, but in if you're trading intraday options, there is very sharp movements in options also. Within a moment, within a minute also, nifty prices can swing by 100-200 points certain times. So those are challenging things. So first I would request you, before actually deploying your capital, do few trades, almost like paper trading. See, paper trading will not result in much, but at least it'll give you the confidence that that you are getting your view right and you are able to execute. Actually, when you actually step into the market, you will be able to do the trades properly. So give it at least 1 to 2 weeks, track option prices at your end, and once you're comfortable doing this, then definitely start with small quantity. Don't even start with large quantities. Gradually build your experience in options, and once you gain confidence, definitely you can trade it. But the main thing I will tell you, as much as possible, try to safeguard your capital, because in derivative trading, yeah, making profit is not so important. Safeguarding your capital is more important, because opportunities every day you will get multiple opportunities, but for that to happen, your capital has to be protected. So whenever you are feeling unsafe about your position, or you feel that the position is not going against you, close out your positions, take a stop loss, take a time to analyze the market, take rest, take a judgment on the market, where the direction of the market is, and then take a fresh position. So there is a question regarding what happens to open option trades after 315 penalties. So this concept which is there, it is there for stock options. See, it is not there so much for index options, because there is no delivery in index options. But in stock options, the rule according to SEBI is, if you do not close out your position at the time of expiry, you will have to take physical delivery of the position. Now let us explain this through an example. So suppose Reliance is trading at 2,400. I'm not telling this in an absolute to this. I'm just explaining the concept to you. So suppose Reliance is trading at 2,400. You have a bullish view on Reliance and you purchase the 2,500 call option. Okay.
You have purchased 2500 call option when Reliance was trading at 2400. When you purchased this particular option, it was an out of the money option. But as the series progressed, your view went right. You had a bullish view on Reliance and the stock reacted absolutely in the way that you thought. The stock goes on the upside, it goes towards 2600. You do not close out your position. You could have easily made 100 rupees on the underlying on your option price and you could have closed it, but you do not close out your position for any XY reason. Your system has some error, or you did not want to close out your position, or any reason you have not closed out your position. In this particular scenario, you will have to take physical delivery of the lot size of Reliance. So suppose the lot size of Reliance is 250 shares. 250 into the strike price that you have purchased, 2400. At that particular price, you will have to take the delivery of Reliance. So that is a huge quantity. You do not have to take delivery at 2600. Definitely you are in benefit, but where you are actually making profit, you will have to take a physical delivery. It is possible for person who has good amount of capital, 10 lakhs, 12 lakhs, that is disposable. But why do you want to do it? It is always better to close out your position before the expiry. If you are a put option seller, agar aapne, I mean, if you have sold a call option, then you will have to give him the delivery. You will have to make good of the lot size, matlab 250 shares of Reliance. So that is why, if you are an option buyer or a seller, if you have not closed out your position, you will have to, if you are a buyer, you will have to take the physical delivery. If you are a seller, you will have to provide the shares to the option buyer. I hope this concept is clear. This concept which is there is applicable to stock options. It is not there in Nifty, Bank Nifty. Even if you do not close, the broker will close out your position. But in stock options, you will have to take the physical delivery if you do not close. So that's why, for the safeguard purpose, the broker at his end itself will close out your positions before the expiry happens. Most of the time, almost all the brokers now have a provision or a risk management system wherein they will close out your position before the expiry actually happens, so that no client goes in towards the physical delivery point. So there is a question regarding stock specific. So stock specific, I'll not like to answer at the current juncture. We'll take questions regarding to the concepts itself, importance of open interest, change, and volumes. See, open interest is a very important thing because it gives you an indication कि traders actual में positions क्या बना रहे हैं. So आज के session में आप देख सकते हो, today's session there was significant surge in open interest of both 22,400 and 22,400 call and put options. So it more or less gave you an indication right at 10:30 itself. अगर आप market का trend देखते हो, you will more or less understand that today was going to be a range bound day. You could have taken a chance and done a short straddle or a iron butterfly strategy. So if you understand, अगर आप देखते थे कि there was aggressive call writing at 2,500, 2,400, more or less you knew that the market was going to face difficulties at the higher end and it would not witness any significant moves in trade today. Likewise, अगर आप देखते हो on the lower side itself, there was aggressive put writing which was seen in 22,400, 22,300 strikes. So you will know that नीचे के direction में भी there was no major trend which was expected. It is how you analyze the price action along with the OI which is of great significance. There is a question regarding India VIX. Sir, VIX पर आपका क्या राय है? 20% आज down है. See, the last time VIX was down such significant going into close as well was after the election outcomes, that is 2009, 2018, I mean 2019 elections. VIX does not break by 20% on a daily basis. Today was definitely a special day where there was such a sharp decline in India VIX. The reason I would not I really do not know how the markets have taken it, but there is a feeling that the election outcome also may have been factored. That is what some of the rumors which are going, that कि election के outcome को factor in किया है market को, but I do not think that's the case. Today being, I think, is a special day. I really do not know how India VIX has broken down by 20%. The last, like I mentioned, it has happened just on 2 other occasions when the outcome of the general elections were declared. That is the last time when India VIX has broken down by 20% in a single trading session.
See, what is the impact of VIX when the option price VIX when VIX decreases? See, definitely when VIX जो है रहता है, it is known as the fear index. There is a reason for it. This is the last question that we'll be taking. There is one more question. I'll take two questions and that will be an end of today's session. So let's take an understanding of VIX. So VIX जो रहता है, VIX is calculated based on next month far out of the money options. So whenever there is aggressive buying of options, either call options or put options, the VIX tends to rise. See, अगर call option का भी aggressive buying होता है, then also VIX tends to rise. If there is aggressive buying of put option also, VIX tends to rise. But what is generally seen in the market, where there is never aggressive buying of call options, it is always aggressive buying of put options. Whenever there is panic in the market, it is always aggressive buying of put options rather than call options. I'll explain the reason also why. 80% of the traders have a long position in the market. मतलब सबका position जो रहता है वो majority long side पे रहता है. It is a fund manager, it is a client, it is an intraday trader. Majority of the time the position is on the long side. Now whenever there is a bit of panic या market में correction आ जाता है, then in order to safeguard his position there is aggressive buying of put option. मतलब आपको मालूम है या fear आ रहा है कि market correct हो सकता है, that is the time when you go aggressively and buy out of the money put options to safeguard your existing position. So when there is aggressive buying of options, that is the time India VIX tends to rise. If you have long position and if the market is gradually increasing on the upside, you do not panic much. You will not go to do anything to hedge your position and all. That is the case with majority of the traders. No one goes to hedge their position when the markets are on the upswing. It is only when the markets come into a bit of panic situation, that is the time people tend to buy put options. So VIX can, like I mentioned, can increase if there is aggressive buying of call options or if there is aggressive buying of put options. But because of the example that I have mentioned, VIX generally tends to increase when there is aggressive buying of put options. So today what we saw was there was a breakdown in the price of VIX. So generally we can see that when the VIX is relatively lower, markets tends to be a bit calm in the market. I mean the market environment tends to be less volatile and people expect the markets to gradually increase or gradually trend on the upside. So that is what we have generally. It has been a historical reference. Agar aap dekhoge, there has been an inverse correlation between the price action of VIX and the price action of Nifty. Whenever VIX tends to go on the downside, markets tends to gradually move on the upside. Or while if there is sharp increase in VIX, markets tend to move on the downside. If you see currently VIX, which is down currently at levels of around 9.5 is what it is at today's level. And if you had seen during COVID time when the markets were at its lowest level, that is around 7,500, 8,000 level, VIX had almost shot up to levels of 80. That is why, because there was extreme fear in the market that no one knew what is going to happen in tomorrow's trading session. So there was aggressive buying of put options, which led to VIX going almost to levels of 80. And that was a time when Nifty was closer towards 7,000, 8,000 levels on the downside. So I'll just take the last question in session. We'll be having multiple sessions. If you want, what I can do is I can have a complete session where I do not take any concepts at all, and we can just have a question and answer session. I'll get my colleagues as well, so we can have a session wherein you just keep on asking us questions. But due to time constraint today, I will not be able to take any further questions. I'll just take one last question, which is there. So please do not be disappointed. Plus we have multiple sessions in technical and derivative. So even if I'm not able to take your question today, I will definitely keep it at the back of my mind, or I will note it down and we can take it in next session. So moving towards the last question. If I buy call and put options same time in out of the money, can it give profits? See, this is a very difficult thing to answer. This may happen just in 1 in 50 or 1 in 60 type scenarios. So now let us take an example that Nifty is trading at 22,400. Now you buy an out of the money call option, that is 23,000 का आपने call option buy किया है.
and you buy an out of the money put option also. You buy something like 21,500 put option. You have purchased both the things, you have spent very little amount of money, you are happy. But how many times in the last one trading day or two trading days will Nifty move by 1,000 points or 500 points on the downside? You will have to repeat this exercise almost for 50 expiries, and then in one or two expiries you will end up making money. So it is a challenge that without a directional view, it is very difficult to make money just by buying deep out of the money call and put options. What is the chance? There is just about 5% or 1% chance that Nifty will move about 23,000 by the time expiry comes, or Nifty will correct below 21,500 by the time expiry comes. So even though these options, that is far out of the money call and put options, may seem very cheap, they will not end up giving you any money, because like I highlighted in the concept of delta, the probability of success, अगर आप 23,000 का call option का delta देखोगे, it will be just about 0.1, 0.2. That means there is just 1% or 2% chance that the markets may move about 23,000 levels in the next two trading sessions. Likewise, the delta of 21,500 put option, which is an out of the money put option, will be just about 0.2, 0.3. That means there is just a 2% or 3% chance that Nifty, which is currently at 22,300, 350 levels, will witness an 800 point correction in the next two trading days. If it happens, then you will definitely end up making good amount of money, because the put option will be just about 5 rupees, 10 rupees, and can suddenly shoot up to around 100, 150 rupees. But that thing will happen just in about 25 to 30 trading sessions. I mean, 25 to 30 expiries, not even trading sessions. So that type of consistency you'll have to maintain. But there are certain traders who do that as well. They keep on buying deep out of the money options, and once in a while they'll end up making money. But I do not know what is the probability of success and what is the ROI on these type of strategies. So that's an end of today's session. I hope I was able to deliver the concepts in a simple manner. I will definitely take the suggestion towards my senior that we could have a session completely on Q&A. Means 1 hour completely I could take all your questions on all the topics. I'll have my colleagues as well. So if you have any questions related to technical analysis, derivatives, psychology of trading, or anything related to trading, we could have question and answer sessions. Thank you so much for having attended today's session. Thank you once again.